Okay, my dear children, so today we are going to start with one very important lesson, and this is the grammar lesson, and the name of the grammar lesson is noun. We'll be discussing about what is noun, the classification of the noun, different type of the classification of the noun, the particular symptom by which we can understand the noun, how these nouns are formed, what are the numbers of the noun, what are the genders of the noun, that also will come to understand from this particular lesson. So my dear children, so when I talk about the noun, so noun, what is a noun? Noun is a naming word. Noun is a naming word. Naming word means it names something. Okay, it names something. It may be the name of the place, it may be the name of the place, it may be the name of the person, or it may be the name of any idea. Therefore, so in the world there are huge number of nouns, and we use this noun in a particular sentence. We use the noun. Suppose that the sentence is India is a very large country. Now see, when you use this particular sentence, in this sentence you will see India is the name, country is the name. Therefore, if we do not use it, then the sentence will not be complete. Therefore, in order to give the special quality to the sentence, what we use, you use the part of speech named as noun. So, noun is the part of the speech. So, what is a speech? Speech is the particular sentence. Speech is the particular sentence. So, you have seen this sentence. Say, for example, gold is a very precious metal. Gold is a very precious metal. So, this is a sentence. Now, in this sentence, there are many parts. Part number 1, 2, 3, 4, 5, 6. है ना? इधर कितने मतलब पार्ट है? 6 पार्ट है. तो ये जो 6 पार्ट है, इसका अलग अलग नाम है. इसका अलग अलग नाम है. और ऐसा है कि मतलब एक सेंटेंस में बहुत सारे संज्ञा होता है, बहुत सारे नाउन होता है, बहुत सारे नेमिंग वर्ड होता है. और वो कैसा प्रकार का नाउन होता है, कैसा प्रकार का संज्ञा होता है, वो हमको जानना बहुत बहुत जरूरी है. सपोज आप written, I have seen a crowd in the street. I have seen a crowd in the street. That means the crowd actually refers to what? A group of people. So that is also a noun, because it refers to what? Name. It refers to the name, but this is the group or the cluster. Therefore, it will be named little differently. Okay. Therefore, my dear children, so in this lesson, so we'll be discussing about the different class and the basis of the classification. Basis of the classification also we'll be discussing in this particular lesson. So normally speaking, so when we talk about the noun, how many kinds are there? There are 5 kinds of the noun. So what are they? There are proper nouns, there are common nouns or class noun, there are collective nouns, and there is some material nouns, and finally there are the abstract nouns. Abstract nouns. So in order to learn all this, and in order to learn much more than it, so let us go to It in English, presented by K. Jalal. So here we go. Let's move. Therefore, my dear children, so we are discussing the noun and its classification. This is a very interesting chapter. So here we will be learning about the noun, the naming word, and how these naming words are formed, what are the characteristics or the sign of it, है ना? ये सारी बात हम इधर जानेंगे. So let us see now
So first let us continue with the definition. What is a noun? Therefore, let us go for it. So what is a noun? So let us go for it. Noun refers to the person, animal, places, things, ideas or events, etc. Noun encompasses most of the world's languages. Most of the words of the language are covered by the noun. Therefore, noun, generally speaking, there are 5 kinds. So, how these 5 kinds are elaborated, how these 5 kinds are used, so we will see. Let us go for it. So now, when the noun refers to the particular person, then it will be what? This will be the personal noun. This will be the personal noun. When it refers to the personal, a particular person like Max, Julie, Catherine, Michael, etc. When it refers to particular individual, then it is personal noun. When it refers to individual animal like the dog, cat, cow, kangaroo, okay, then this dog will be what? This dog will be the personal name. The personal name. Therefore, this animal is what type of noun? Animal is the common noun, isn't it? So this is the common name. This is the common name. So this animal may be dog, may be cat, cow, kangaroo, isn't it? So this is common. Means all this belongs to what? This belongs to the category of the animal. All right. तो अभी देखते हैं जब हम प्लेस बोलते हैं a name for a place, suppose London, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई etc. जब हम प्लेस बोलते हैं तब क्या होता है? तो प्लेस क्या होता है? प्लेस मतलब कॉमन होता है ना? प्लेस तो कॉमन होता है. और मतलब क्या होता है? प्लेस मतलब प्लेस का अंदर में मतलब क्या है? सपोज लंदन है, इंडिया है, कनाडा है, मुंबई है, तो ये क्या हुआ? ये दिस इज द specification, means this is the particular name. If it is a particular name, तो उसका नाम क्या होगा? This will be the personal noun, means it will be the proper. So let us see the next category, thing. A name for a thing: bat, ball, chair, door, house, computer, etc. तो ये सारे चीज मतलब क्या चीज का है? ये मतलब थिंग को रेफर करते हैं. So this noun may refer to the idea. So the idea is the idea of the devotion, idea of superstition, idea of happiness, idea of excitement. Okay. So इसके लिए क्या noun होगा? That also we'll have to see. So many of the nouns you cannot see. You can only feel. तो उसका नाम भी अलग होगा. उसका नाम क्या होगा? Abstract noun होगा. So, my dear children, on the basis of this variety, so noun is divided into 5 class or kind. So let us go for it. Let us see the kind. So, so here you see, my dear children, so we have this 8 class here, but we will be making a new class. From here we will be making a new class. So normally speaking, so when we are talking about the noun, say for example, I'm talking ball, ball. Suppose so 1 ball, 2 ball, 3 balls, 4 balls, 5 balls, etc. That means you can count it. Now when I'm talking about KIN, kindness, जब हम kindness का बात कर रहे हैं, then can you count it? Can you measure it? Then it is not possible to count. You cannot say 1 kind, 2 kind, okay, 3 kindness, 4 kindness. You cannot say. Therefore, noun on the basis of this is divided into broad category. One is countable noun. One is countable noun. Means जिसको हम count कर सकते हैं. And the other one is uncountable. Means that the nouns that we cannot count is uncountable noun.
So there is another basis for the division of the noun, and this division is. So आप अभी हम देखेंगे. So ये noun जो होता है ना, ज्यादातर noun मतलब क्या होता है, कुछ तो होता है मतलब materials होता है, कुछ मतलब क्या होता है quality होता है ना, कुछ materials होता है, कुछ मतलब क्या होता है materials होता है, कुछ क्या होता है quality होता है, qualities. तो हम qualities बोलते हैं, qualities है ना. तो मेटेरियल जब बोलते हैं तो उसको नाम क्या बोलता है, मेटेरियल नाउन है ना. तो मेटेरियल नाउन और जो क्वालिटी मीन करते हैं तो उसको नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो ब्रॉडली स्पीकिंग, इन अनदर वे वी कैन डिवाइड द नाउन इनटू two broad categories. One, material noun, another the abstract. So now very interestingly, so noun, there is another division of the noun, है ना. ये जो noun है ना, ये बहुत मजेदार चीज है. तो इसका मतलब क्या होता है, noun का क्या होता है. So as you have seen, you can count some, you can count other. Therefore इसका क्या होता है, noun का नंबर होता है. noun का नंबर मतलब नंबर कितना प्रकार है. noun one is singular, another one is plural. noun का ये भी हो सकता है ना. तो इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होता है. सो वी विल हैव टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, जस्ट बाय यूजिंग व्हिच सो वी कैन चेंज द सिंगुलर टू द प्लूरल, है ना. सपोज KNIFE ना, this is the noun. So this is the material noun. Now you want to make it plural, then the KNIVS. The answer will be nice. So in this way, so many of the nouns, so they will be taking sometime as, sometime es, in order to make the plural form. So many of the noun which are ending with y will be changing y into the I, and then es will be added. So in this way, from the singular we can make the plural. So this is quite interesting. Now another division of the noun is that noun can have what? Suppose I am talking Mary and I am talking Milton. So Milton is a boy and Mary is a girl. That means noun can also be classified on this manner, okay, into two classes. What are the classes? So these classes are feminine, gender. On the basis of the gender, it can be divided into two broad classes. Normally what is there? There are four classes. So we'll be discussing only two of them. One is if it is a boy, then it will be masculine. Okay, masculine. If it is a girl, then it will be feminine. It will be feminine. Therefore, so these are the different way we can divide the noun. तो अभी हम आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं. तो अभी हम देखते हैं ये नाउन को मतलब कैसे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पेशलिटी, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पेशलिटी नाउन को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं. तो नाउन का ये एक नाउन है प्रॉपर नाउन, दूसरा नाउन है कॉमन नाउन, तीसरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा नाम है कंक्रीट नाउन, एंड देन फिफ्थ इज कलेक्टिव नाउन. यह हम बात अभी पहले कर लिया. तो देयरफॉर we will not go for this account and uncountable. So we will be going for this one. So in Hindi, the noun is called Sangha. So proper noun is a what? Vyakti Vasak Sangha. And then common noun is Jati Vasak Sangha. Matlab that actually refers to the particular class. So it is a common thing. From the common you can find the individual. You can find the what. So again there are some solid noun.
there are some solid noun, you can touch it, you can use it, you can see it, means all the senses of you can actually see, feel and realize them. They are the concrete noun. So some of the noun actually refers to the cluster or the group. They are called the collective noun, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक बोलते हैं। और जो लास्ट है वो क्या है? So that is the abstract. Yes, abstract we have already discussed. Therefore, these are the different types of the noun. Now let us go for one by one. Okay, we will be discussing, and then your concept will be very clear. Okay, so now when you learn about this particular definition, application of the same, your logical power certainly increases. And at this present time, what is more important? Your reasoning power is to be developed. Your critical faculties is to be developed, and therefore you have to know the theory, you have to know the application, and before that, what is needed is that it is better to know the definition or the theory. Let us go for it. Now, let us go for the first one, proper noun. So, what is a proper noun? Proper noun means what? So, जो व्यक्ति को मतलब इंडिकेट करते हैं, है ना? प्रॉपर नाउन में क्या क्या चीज हो सकता है? सो प्रॉपर नाउन में क्या क्या चीज हो सकते हैं? सिंगल पर्सन हो सकते हैं, सिंगल प्लेस हो सकते हैं, और सिंगल थिंग हो सकते हैं। सिंगल पर्सन मतलब क्या है? सपोज मिल्टन बहुत मिल्टन, सिंगल प्लेस से हो सकता है, ये हम दिल्ली बोला, है ना? और सिंगल थिंग हो सकता है, मतलब सपोज सिंगल थिंग मीन्स दिस इज द वर्ड. So in this way, when a particular noun refers to a single person, place or thing, then it is called the proper noun or व्यक्ति वाचक संज्ञा. तभी हम देखते हैं ये proper noun is a name which refers only to a single person, place or thing, and there is no common name for it. इसके लिए कोई common name नहीं है. Let us go for the example. Let us see the example. So व्यक्ति वाचक जो होता है, सपोज हम एक सिटी के बारे में बात करते हैं, मेलबोर्न सिटी और मुंबई सिटी है, तो ये क्या होता है कि दिस रेफर्स टू द पर्टिकुलर सिटी, ये एक विशेष एक सिटी का बारे में बात करते हैं. स्टीव, इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर पर्सन, है ना? स्टीव और जॉन, ये जो है ना, ये एक विशेष व्यक्ति को मतलब रेफर करते हैं. So when you are talking about a particular country like Australia, there is no other country named Australia, means it is very specific. इसमें और कोई दूसरा मतलब कंट्री नहीं है ये दुनिया में जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, मतलब ये वेरी स्पेसिफिक है, वेरी स्पेशल है. ओके, therefore let us go for the rule related to this, then it will be quite interesting. तो ये जो हम सपोज अभी हम ऑस्ट्रेलिया का बारे में बात किया, ऑस्ट्रेलिया. सो कैन यू राइट AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया. कैन यू राइट INDIA? So if we start with India is a big country, India we have written small letter, then will it be correct? No, it is not correct. So it will be wrong. That means the proper nouns always start with a capital, है ना? अगर मतलब कोई व्यक्ति का नाम हो और कोई विशेष मतलब जगह का नाम हो और कोई मतलब आइडिया का नाम हो, थिंग का नाम हो, तो क्या होगा? वो कैपिटल में होगा, है ना? Therefore we will have to remember it, then only there will be mistake free writing. Okay, our writing will be mistake free when only we can know the rule pertaining to it. तो आजकल मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम ये थ्योरी मतलब नहीं पढ़ते तो अक्सर मतलब ये चांसेस रहता है कि हम जब राइटिंग करेंगे तो हमारा राइटिंग नहीं गलत हो जाएगा. तो अभी सपोज मतलब थाईलैंड है तो ना ये टी मतलब स्मॉल लेटर दे दिया. कभी कभी मतलब क्या होता है कि मोबाइल का जो लैंग्वेज है ना,
सो जो मोबाइल में मैसेज जो हम करते हैं, व्हाट्सएप में जो मैसेज देते हैं, कभी कभी वो मैसेज भी मतलब कभी कभी गलत मतलब दे देते हैं, हरी भरी में दे देते हैं ना, उसमें ग्रामेटिकल एग्जैक्टनेस और प्रिसिशन को हम ध्यान में नहीं रखते, लेकिन वो रखने का जरूरत है। जब आप हर मतलब एप्लीकेशन में आप करेक्टली लिखेंगे तो आपका राइटिंग करेक्ट होगा। तो इसीलिए सो यू आर टू लुक एट द एग्जैक्ट रूल। नाउ लेट्स गो फॉर इट। So let us see the example. So we are talking about Rome. So it is said that Rome was not built in a day, and the capital of Italy is Rome. The capital of Italy is Rome. So Italy is the name of the country, and Rome is the name of the city. Rome is the name of the city, है ना, capital city. Say for example we are talking about Guwahati, है ना, we are talking about Guwahati. So this Guwahati now is changed. Okay, the spelling is changed now. The present Guwahati is Guwahati. So this Guwahati is the capital of Assam, and therefore this Guwahati is what? So this will be the proper noun. Now we need to remember one particular thing. Adjective that we make from the proper noun also usually start with a capital letter. For example, Shakespearean, Orlean. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हम क्या करते हैं, मतलब वर्ड फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, तो हम नाउन से क्या करते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, है ना। तो ये हो गया मतलब नाउन हो गया। यहां से हम मतलब क्या करते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। तो ये हो गया नाउन में हमारा शेक्सपियर, है ना, थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, शेक्सपियर। एंड फ्रॉम देयर वी आर राइटिंग SHAKESPEAREAN, शेक्सपियरियन, है ना, शेक्सपियरियन ड्रामा और शेक्सपियरियन प्लेज। तो ये जो है ना शेक्सपियरियन, सो these are also to be started with the capital when you are making the adjective from it. So I suppose you understood it. Now let us go for the next one. Therefore the next one will be more interesting because this is a common noun, will be including what? The proper noun too. Therefore it is a very interesting. A common noun is a name for something which is common for many things, है ना। So common word से मतलब मालूम पड़ता है ना। कॉमन मतलब क्या था, कॉमन मतलब ये क्लास था। कॉमन नाउन और क्लास नाउन, कॉमन नाउन और क्लास नाउन ये जाति वाचक है, मतलब ये कुछ मतलब जो क्लस्टर होता है, एक ही टाइप ऑफ द थिंग, दे आर देयर, ओके, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसका नाम कॉमन नाउन बोला जाता है। तो हम देखते हैं कॉमन नाउन इज द नेम फॉर समथिंग व्हिच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। It encompasses a particular type of thing, person or places, है ना। So country, तो जब हम country की बात करेंगे, it refers to any country, है ना, it refers to any country. So जब हम country की बात करेंगे, suppose country is the common name, और ये country का अंदर में मतलब क्या आ सकते हैं, so country का अंदर में मतलब क्या क्या आ सकते हैं, तो इसमें दुनिया का जितना मतलब countries है, starting from India. So there is a Pakistan, there is a Bangladesh, there is a United Kingdom, there is a United States of America, all these and so on. That means this is the country is the common noun. Most noun, अभी देखिए ये फॉर्मूला देखिए, most nouns are common nouns. ज्यादातर नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। Common noun refers to the people, places and things in general like the chair or dog. Any noun that is not a name is a common noun, है ना। सो ज्यादातर नाउन मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन नाउन होता है। और जो कॉमन नाउन में जो माने कुछ स्पेशल नाम नहीं देता है ना, कुछ स्पेशल नहीं जब नाम देते हैं तब वो नाउन क्या होता है, कॉमन होता है। अगर स्पेशल नाम दिया तब क्या होता है, सो दिस बिकम्स द proper noun. This becomes the proper noun. Therefore, let us continue now. Suppose we are talking about a teacher. So teacher is what? Teacher is the common noun.
सो ये टीचर में बहुत सारे मतलब नाम हो सकते हैं. सपोज जॉन इज द टीचर, देन ब्राउन इज द टीचर, देन मिल्टन इज द टीचर, देन एडवर्ड इज द टीचर. ओके, तो ये सारे, अभी एक चीज हमको बहुत अच्छे से मतलब मालूम हो गया कि ये जो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक नाउन है, ये मतलब किसका अंदर में आते हैं? ये कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन के अंदर आते हैं, है ना. तो अभी हम देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो अभी हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So my dear children, so many times what exactly happen? So if you know the synonyms and the antonyms of a particular word, then half of the work, half of your understanding is complete. So अभी देखते हैं ABSTRACT, abstract. तो abstract का मतलब क्या है? abstract का मतलब है क्वालिटी, है ना. abstract का मतलब है क्वालिटी. तो क्वालिटी जो चीज है मतलब ही इज वेरी काइंड. तो काइंड के मतलब दिखाई देते हैं, काइंड के दिखाई देते हैं, नहीं देते ना. तो इसको मतलब क्या बोलेंगे? काइंड जो चीज मतलब आप मेजर नहीं कर सकते, जो चीज आप काउंट नहीं कर सकते, उसको मतलब क्या बोलते हैं? उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. और दूसरा जो है कि मतलब द पर्टिकुलर थिंग दैट योर सेंसेस cannot account abstract noun. तो अभी हम देखते हैं, abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there, है ना. उसको मतलब आप सीन नहीं कर सकते, you cannot see it. It has no physical existence. इसका कोई physical existence नहीं. Generally it refers to the idea, qualities and condition. तो ये क्या क्या चीज को मतलब रेफर करते हैं, ये क्या क्या चीज का मतलब इसको ये पॉइंट आउट करते हैं. So it refers to the ideas, qualities and also conditions. तो ये जो है अभी देखिए, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा एकदम आइडिया एकदम बढ़िया से मतलब क्लियर हो जाएगा. सपोज पैट्रियोटिज्म. तो पैट्रियोटिज्म ऐसा एक चीज है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो तो है ना. we can feel the patriotism. We can measure the kind of the patriotism, measure कर सकते हैं, है ना, अंदाजा कर सकते हैं. So there is a humor जो है ना. So आदमी मतलब क्या होता है? चार्ल्स चैपलिन. So he had the sense of the humor and therefore he could make the whole world laugh. तो ये जो है ना, तो ह्यूमर मतलब क्या नहीं, ये दिखाई नहीं देते. तो ये दिस ह्यूमर ऑल्सो इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप, टाइम पास हो जा रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि मतलब हाँ, इट इज ऑल द सेम, देयर इज नो डिफरेंस between it, but you can only feel that yesterday it was a Sunday, today is Monday. So in this way you can feel only. Abstract nouns are the opposite of the concrete noun. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जो कंक्रीट नाउन होगा उसका अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कुछ है मतलब सॉलिड, जिसका फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और कुछ जो है सॉलिड नहीं है, कुछ सॉलिड नहीं है. यू कैन ओनली फील, यू कैन ओनली गैस, यू कैन ओनली इमेजिन. और वो सारे चीज क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. जब आप कविता पढ़ते हैं, है ना, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तब आपको क्या करना है? सो यू आर टू यूज योर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी. You are to imagine, you are to think, you are to analyze, है ना. ये जो कैपेसिटी आपका जो है ना, आपका जो क्रिटिकल फैकल्टी जो है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो काम बहुत करते हैं, है ना. वो काम बहुत उम्दा काम करते हैं. और वो काम के लिए क्या होता है? दुनिया में डिस्कवरी होता है, इन्वेंशन होता है ना. नया नया चीज हमको देखने को मिलता है और आगे भी देखने को मिलेगा. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? योर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, है ना. जहां नहीं पहुंचता है रवि, उधर पहुंचता है कवि. ये जो कवि पहुंचता है, कवि कैसे पहुंचता है? कवि पहुंचता है उसका एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के कारण. तो एब्स्ट्रैक्ट का क्वालिटी जैसा कंक्रीट मतलब चीज जरूरत है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. आप समझ रहे हो, है ना. देयरफॉर लेट अस गो.
Now let us see the next noun. The next noun is the concrete. So that the term concrete actually refers to solid. Concrete means solid. Means which has the shape, which has the size, which has the visibility. Means you can see it very clearly. You can see it. तो उसका हम नाम दिया है concrete noun. A concrete noun is the exact opposite of the abstract noun. है ना? Repetition. पहले भी हम बोले. So it is the opposite of the abstract noun. It refers to the thing we see and have physical existence. जो चीज का physical existence है, जो दुनिया में रहता है, जो हम देख सकते हैं, उसी को हम concrete noun बोलते हैं. उसको हम केवल नहीं देख सकते, उसको हम टच भी कर सकते हैं. Therefore, the examples are the chair, table, bed, bowl, water, money, sugar, man, rice, hat, etc. So, let us see the sentence. How many stars are there in the universe? How many stars? So, stars. यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं? तो स्टार्स मतलब दिखाई देते हैं, उसका एग्जिस्टेंस है, तो वो क्या होता है? कंक्रीट. तो यूनिवर्स मतलब एकदम मतलब ना एक ही यूनिवर्स है, वो दिखाई देते हैं, है ना? ब्रह्मांड ये दिखाई देते हैं, तो ये भी क्या होता है? कंक्रीट नाउन. Pour the water down the drain. ये देखिए पानी जो है ना, पानी water is what? You can see the sea water. Drain you can see. Therefore, both of them are the concrete noun. Then let us go for the next one. Let us go for it. So this one is a very interesting, my dear children. It is very important. So this particular term collective actually refers to what? It actually refers to cluster, cluster. It refers to what? Group, है ना? तो इसीलिए उसको मतलब क्या बोलते हैं? समूह वाचक संज्ञा. मतलब एक संज्ञा ऐसा संज्ञा भी है जो समूह को, ग्रुप को, क्लस्टर को, क्राउड को, है ना, रेफर करते हैं. तो अभी हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा क्या है. A collective noun is the word for a group of things, people or animal etc. तो ये हो सकता है कि मतलब ये ग्रुप, ये थिंग्स का, सामान का, पीपल आदमी का, एनिमल, ओके, एटसेट्रा. एक कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब ये कलेक्टिव नाउन ऐसा एक नाउन है जो इंडिकेट करते हैं, जो डिनोट करते हैं एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो इसमें क्या है माय डियर चिल्ड्रन? सो मेनी टाइम व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, सो वी गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज this group noun, whether it will be singular or plural. So when we are talking about the subject and the verb conjugate, okay, subject and verb, है ना? जब आप एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब कंजugate मतलब में जाएंगे, तब क्या है कि सपोज क्लास, whether this is a class or say the word is a jury. Jury is the combination of some people who actually make some judgment. Class is the cluster of say 40 students. Now, when the teacher actually mean a group, okay, mean a cluster, then it will be singular. Okay, the class is wanted here. Class is wanted here means all the children of the particular class will have to go there. We'll have to go to the assembly ground, like, है ना? Therefore, when we talk about the individual person in the class, then it will be plural. So in the similar manner, jury, the word jury, it is a singular. So when it refers to the individual member and there is no unity. There is no unity between the members, and they pass a comment or the judgment which actually is not unanimous, which is not unanimous. Then what will happen? Then it is the
it actually refers to the plural and it will be taking the plural verb, है ना. तो ऐसे आपको मतलब सब्जेक्ट वर्ब में कंक्लूड कैसे करना होगा. So you will have to see, you will have to understand the implication of it, and then it will be easier. So my dear children, let us see, collective nouns can be both the plural and singular. However, American prefer to use the collective noun as singular. अभी देखिए, American and the British, what is the basic difference? The American people, they want that this is a collective noun, whether it is a jury, whether it is a crowd, or whether it is the flight of the bird or the shoal of the fish, they actually want it as the singular. But in the British English, so they may refer both either to the singular or the plural. Let us go for it. Let us see the example. So let us see the example. By rule, let us see. Collective noun can be treated as singular or plural, है ना. तो अभी इसको हम पहले बोल दिया. तो अभी हम देखते हैं तो how it is used as singular and how it is used as plural. His family live in different countries. Okay, his family. तो ये जो हुआ, ये family, how it is used? It is used as singular or plural? ये कैसे मतलब यूज हुआ? ये plural का हिसाब से यूज हुआ. अगर ये singular होता तब क्या होता? ये मतलब in this family, suppose there are 5 members and all these 5 members live in different country. We refer to 5 people. We refer to these 5 people, okay, separately. We mean these 5 people when we are talking about this word family. Therefore, this word family here, even though it is a group of word, even though it is a collective noun, yet it refers to the individual, and okay, this family is the combination of these members. Therefore, we are talking about them separately, and therefore it will not attack s after live. Therefore, okay, it will be live only. The family lives in the different countries. Now let us see the next example. Then our idea will be very clear. An average family consists of 4 people. अभी देखिए सेम है, ये वर्ड फैमिली मतलब सेम है, लेकिन इधर क्या हुआ? कंसिस्ट का मतलब है फॉर्म, गठन होना. तो ये जो है ना, दिस वन it is a collective noun, but it refers to what? One unit, one concept or unit. Therefore, this is what? This is singular, and therefore, as it is singular, therefore it is taking s after the verb consist. Am I clear? Therefore, let us see the next example. The new company is the result of a merger. तो कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी, when they have the bad times of many of the companies, then many of the companies like the Aircel, Vodafone, so what do they do? Under one banner they come and the new company is formed. Therefore, similar is the case here. A new company is the result of a merger. Means कई सारे कंपनी थे, वो कंपनी को एक साथ मतलब क्या किया? मर्ज कर दिया, है ना, इकट्ठा कर दिया गया, यूनाइटेड कर दिया गया. Therefore, this is a new company. So this is a new company. So now it is a unit. It is a single unit. Therefore, it will be having is. Therefore, you will have to see this agreement between the subject and the verb. And normally the subject is what? The noun. And this noun is what? This noun is the collective noun. Therefore, this collective noun may either be singular or it may be plural, and it depends on the sense that is implied, that is denoted. Alright? Therefore, I suppose you understood it. Now let us continue now. So my dear children, so I will be talking about now some of the signs by which you can identify the noun. So what are the signs by which you can identify the noun? What are the signs by which
you can identify the noun. Supposing this word is kind, kind. Okay, kind. So what type of part of speech it is? It is. So this part of speech is adjective. And from there, so when you are going to form the noun, then it will be a kindness. Kindness. So what is added is ness. N-E-S-S. That means this ness is added. तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है suffix. है ना? इसका नाम है suffix. Means just by adding some of the suffixes, we can form the noun from the adjective. Say for example, the word is child. Child is the father of a man, है ना? वो child है. तो child से हम क्या लिखा? childhood ही लिखा. तो इसमें क्या चीज मतलब ऐड किया? हम हुड को ऐड किया. तो ये हुड मतलब क्या है? This is the suffix. Therefore, just by adding some of the suffixes, we can form the noun. We can form the noun, and the noun may be of different type, as you have to discuss the 5 different types. Generally speaking, all noun ending in ness. Okay. Let us see it once again. So generally, what happen? So some of the noun start ending with the ness, and then many of them ending with the tion. Many of them ending with hood. Many of them ending with the sheep, and many of them with many of them ending with the ment, ism. Okay, ism, cyicth. So ये सारे जो साइन है, ये साइन ऐड करके क्या करेंगे? So we form the noun from the adjective. Therefore, we have to remember all this so that we have the best concept. We can form the word easily, and we can enrich our vocabulary. We can write the sentences beautifully. So now let us see some of the functions of the noun, and after discussing this function, so we'll be directly going to the exercise. We will make the practice of the exercise, and then our lesson will be over. Functions of noun. तो function जो है noun का जो function है वो हम अभी देखेंगे. Noun can be used as subject, direct object and indirect object of a verb. तो अभी हम application में आते हैं, है ना? तो application और उसको uses बोलते हैं. तो हम जब sentence मतलब use करेंगे, sentence में noun जो होता है वो subject. Normally ये ज्यादातर मतलब क्या होता है? Subject होता है. कभी कभी ये object होता है, कभी कभी direct object होता है ना? Direct object do. कभी कभी indirect object IO होते हैं, है ना? Indirect object. He teaches us English. So us and English. So here we will make out what is the direct object and what is the indirect object. Therefore, now let us see the example. The companies are doing great. Roses are the flowers of love. So here you see direct object and indirect object. We will see now. I finally bought a new mobile. So direct object मतलब क्या है? Mobile है. I finally bought a new mobile. Indirect object देखते हैं. Max gave Carol another chocolate. So Max किसको दिए थे? Max मतलब किसको दिए थे? Carol को दिए थे. क्या दिए थे? Chocolate दिए थे. So indirect object here is Carol. So in this way we can use it as a direct or indirect object. Now object of the preparation. तो preparation तो आप जानते हैं. This also another part of the speech. Roses are the flowers of love. तो ये जो है of is the preposition. of के बाद में आते हैं. ये of का object हो जाते हैं. तो ये preposition का जो object है. So in this way we can use this noun as the object of the preposition too. Now let us see
how it is used as, okay, the object of the adverb. The train leaves today. The train leaves today. है ना? Train leaves. So this is the verb. So today is what? The adverb. Therefore, in this way, today is a noun used as adverb. So how it is used as adjective? The office building faces the mall. तो अभी देखिए, ये बिल्डिंग तो मतलब क्या होता है? बिल्डिंग इज नाउन. ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस का पहले मतलब आते हैं, तो ये क्या होता है? सो दिस विल बी द एडजेक्टिव. Therefore, noun is also used as adjective. Quite funny. Position का मतलब क्या है? Position का मतलब है owner. Become the owner. Means showing the position. Means the possessive case. Means this apostrophe mark will be there. Suppose Hari's book, है ना? Hari's book means the book of Hari. So this shows the position. Therefore, in a similar manner, lion's case is dangerous. Lion's case is dangerous. Lion's case means the case of the lion. Okay. Therefore, after the position, so we can use this. My brother's daughter. So here also you see brother, noun, apostrophe mark. This shows the possessive. Therefore, daughter is also already noun. Therefore, this noun is used as the position. This noun is used as the position. So I suppose, my dear children, you understood the functions of the noun into the sentence. So now it is time for us to go for the exercise that are frequently asked in the competitive exams and your interim exams or your annual or terminal examinations. Therefore, let us go for it. So here we go. Choose the correct form of the noun given in the brackets. तो अभी हम देखते हैं, इधर example हम देखते हैं one after another. A large crowd or crowds is expected. तो अभी देखिए, ये जो is है, this is singular. तो इधर क्या आएगा? तो इधर crowd आएगा. This is the singular. A large crowd is expected. Means this crowd actually refers to what? This is the collective noun. This pair of means it actually refers to what? Plural. तो अभी शू होगा और शूज होगा, तो सडनली मतलब क्या होगा? शूज होगा, है ना? पेयर ऑफ शूज होगा. लेकिन ये सारे मतलब क्या चीज को इंडिकेट करते हैं? दिस एक्चुअली रेफर्स टू द सिंगुलर, है ना? क्योंकि ये मतलब ज्यादातर मतलब क्या है? दिस एम्फेसाइज हियर ऑन द पेयर. सो पेयर इज regarded as in the cluster or the group, and it is regarded as in the singular, and therefore it is taking is. A pair of shoes is good. Means we are concentrating or emphasizing on pair. Even though shoes is a plural, so it will not go by shoes. So is will be going by the pair. I suppose it is clear. Now let us go for the next one. Those gloves were found there. अभी ये तो simple है. This is a plural. Certainly this will be plural because there is no other noun here. Therefore, this gloves, gloves, gloves. तो इसके लिए ये भी मतलब एक साइन है ना? This is not this but these. Therefore, this will be plural. Therefore, in this way, we will have to see the agreement or the concord between subject and the verb, and your editing work also will be correct. Many जो होता है, many मतलब क्या होता है? Plural होता है. तो उसके बाद मतलब क्या होगा? उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा? Plural होगा. तो अभी देखिए people and peoples. तो peoples तो मतलब plural नहीं है. So people itself is the word people itself is a plural, even though form is singular, yet it is plural. Therefore, many people, है ना? उसके बाद have visited us.
Let us see the next one, number 5. Most desks are well built. Most क्या ना, ज्यादातर, ज्यादातर मतलब वो क्या होगा, वो क्या मतलब ज्यादातर का मतलब क्या होगा, उसके साथ जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा. Most house, houses, houses is plural, therefore it will be taking the plural form, so it will be houses. Most houses are well built. Let's see the next one now. Let's go for it. तो अभी इधर देखते हैं सीसर एंड सीसर्स. सो ये जो टूल है, पर्टिकुलर टूल है ना, सो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, है ना, दिस स्ट्रक्चर. सो दिस ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, देयरफॉर द सीसर्स नीड sharpening. So when you are talking about the particular tool, so this is the plural in form, because this is having two types of the fork, okay, two type of the fork, therefore it is the plural form, not the singular form. Therefore this scissors, scissors need sharpening. So I suppose you understood it. Now let us go for the next example. Exercise number next. So this one is quite interesting, my dear children. So this in this particular part we will see which is a very frequently asked in CBSE. So that is called jumble words. इसको क्या बोलते हैं? जम्बल वर्ड्स. ये जम्बल का मतलब क्या है? जम्बल का मतलब है मीन्स not in a order. It is not in order. There is no chronology. ये जैसा होना चाहिए था वो नहीं हुआ. मतलब ये एक्चुअली उसको सिंटेक्स हम बोलते हैं. मतलब जो वर्ड ऑर्डर होते हैं, वर्ड मतलब सपोज ए particular sentence which is assertive sentence, and in the assertive sentence what will come first? In the assertive sentence subject will come, main verb will follow, and after that there will be the object or the predicate, then there will be the full stop. So this is the normal order of the sentence, and this order को मतलब हम क्या बोलते हैं? उसको हम syntax बोलते हैं. तो when we are talking about this, when we are talking about the rearranging the words in order to form the sentence from the jumble words, we will have to remember the syntax. What comes first, whether there is some antecedent, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी देयर, सब्जेक्ट के पहले मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स होगा जो सब्जेक्ट को मतलब एक्सप्लेन करते हैं. तो वो सारी चीज हमको देखना पड़ेगा. वर्ब का पोजीशन देखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा होने से उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, है ना. एसआरडी सेंटेंस होने से उसको फुल स्टॉप देना पड़ेगा. इंटरगेटिव होने के बाद वो क्या करेगा? सो यू विल हैव टू गिव द क्वेश्चन मार्क, एंड देन व्हेन इट इज अ इंपैरेटिव सेंस, देन द वर्ब विल कम फर्स्ट, देन द अदर विल फॉलो मींस द प्रेडिकेट विल फॉलो. ये सारे जो चीज है ना, ये आपको मतलब मालूम होना पड़ेगा व्हेन आर rearranging the words or phrases to form the meaningful sentences. तो बच्चों अभी हम देखते हैं. सो अगर मतलब किसी ने मतलब आपको ये सेंटेंस मतलब लिख दिया है ना, सपोज द सेंटेंस इज रीड आई अ बुक. तो ये देखिए इसको हम मतलब अलग अलग कर दिया. तो रीड आई अ बुक, सो विल एनीबॉडी अंडरस्टैंड इट? नो ना. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले देखना पड़ेगा, आपको सेंस देखना पड़ेगा. सो सी द सेंस नाउ, रीड आई अ बुक. तो इधर ना आप 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको एक अंदाजा होगा, हाँ व्हाट इज द सेंस दैट इज इंप्लाइड हियर. तो पहले क्या होता है? जैसे पहले तो है मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज एन असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें मतलब फुल स्टॉप लास्ट में आता है. सो असर्टिव जब सेंटेंस होगा तब क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा. तो सब्जेक्ट मतलब इधर क्या है? आई इज द सब्जेक्ट. आई के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा. मेन वर्ब इज रीड. देन उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, आ बुक. ओवर, फुल स्टॉप.
So this is the full sentence. Now when I tell I read a book, then you understand, yes, sir reads a book. Okay, reads a book. It may be any kind of a book. It may be novel, it may be drama, it may be religious book or any other book. Okay, therefore you will understand it. Now let us go for this rearranging. And many times what exactly happen, my dear children, when your grade, okay, become bigger, means suppose you are in class 6, then it will be easier level. When you are in class 9, it will be little difficult. When you are appearing in a competitive exam, then it will be more difficult. Then you will have to go for the type of the sentence. सेंटेंस का जो टाइप है, सेंटेंस मतलब 3 टाइप का है. एक है सिंपल सेंटेंस, है ना, जो आपका सिंपल लेवल में अप टू 5 to 7 जो लेवल है, वो लेवल में आपका सिंपल सेंटेंस आएगा. सो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आफ्टर 8 आपका लेवल चेंज होगा, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्वेश्चन आएगा. 9 से लेकर आपका जो होगा, जो सेंटेंस आपको आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि हाँ सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है ना. तो ये भी आपको जानना जरूरी है. और सिंपली स्पीकिंग, सो ये के जो सिंपल सेंटेंस है, जो इसमें एक केवल फाइनाइट वर्ब होता है. आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, ये फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब, तो उसको सिंपल सेंटेंस बोला जाता है. आई नो द मैन हु केम हियर, ये जो सेंटेंस है, these are the combination of 2 clauses. One clause is independent clause, another clause is dependent clause. तो ऐसा मतलब सेंटेंस को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं. और तीसरा जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस, मतलब आई एम वॉचिंग द मूवी, यू आर ड्रिंकिंग कॉफी, you are drinking coffee and I am watching movie. So these are the compound sentence. So you will have to mind this sentence structure also while you are going for the arranging of the words, arranging of the words in the sentence. Let us see it. All have been eaten mango the. इधर देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में मतलब क्या सेंस है, व्हाट इज द सेंस हियर, ये देखिए. All have been eaten mango the, ये है ना, ये देखिए मैंगो हो गया, मैंगो हो गया, मैंगो नाउन है. मैंगो का पहले मतलब क्या आएगा, ऑल मैंगोस. तो ये क्या होगा, ऑल मतलब क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ऑल मैंगोस. ओके, उसके बाद क्या आएगा, have been eaten, have been eaten, तो हो गया. तो ये क्या कैसे, मतलब दिस इज द पैसिव फॉर्म, दिस इज द पैसिव फॉर्म. तो इसका आपको कैसा करना होगा, सो यू नीड टू डू लाइक दिस. तो आपको मतलब ना ये नंबर देना पड़ेगा, आपको क्या देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा. आपको सेंस पहले देखना होगा. ये जब जैसे मतलब ये पहले सेंटेंस में आपको मतलब ये पैसिव फॉर्म है ना, पैसिव वॉइस में है. तो पैसिव वॉइस में है, अगर मतलब ये आपको मालूम नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा. तो देयरफॉर यू विल हैव टू सी दैट आल्सो. That means when you are going for this sort of integrated practice, है ना, ये integrated practice है, मतलब सामूहिक है. integrated मतलब ना summing up means all your knowledge is tested here. Therefore आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको भी मतलब ना जो जितना क्रिटिकल फैकल्टी है उसको मतलब जागरूक करना पड़ेगा. Therefore अभी आप सेंस देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ गया कि दिस इज अ पैसिव फॉर्म. तो उसी लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव द नंबर. नंबर किस लिए हम देंगे, ये लॉजिक यही है कि नंबर अगर हम नहीं देंगे तब क्या होगा, कभी कभी कुछ वर्ड मतलब क्या होगा, कुछ वर्ड छूट जाए. सो इफ सम वर्ड्स आर लेफ्ट आउट, दैट मींस योर सेंटेंस विल सर्टेनली बी व्हाट, देयरफॉर यू विल हैव टू गार्ड दैट आल्सो. तो अभी हम देखते हैं. तो ऑल दे दिए, ऑल फर्स्ट में आ गए, वन है ना, ऑल. मैंगोस तो मतलब नहीं आएगा पहले, तो ऑल मतलब मैंगोस को स्पेसिफाई किया, तो ये द आया, ऑल द मैंगोस
have been eaten. So answer will be the first one. For the first one, the answer will be all the mangoes have been eaten, full stop. Let us see the next one. School rooms our 40 has. तो यह हमको पता ही चल गया कि मतलब our school number one, our school has 40 का है 40 rooms. So in this way, cricket ball leather are made of is. So that means we are talking about the cricket ball. So how many cricket ball? A cricket ball is made of leather. Over. Italy, a young boy to art study went. So what will be the answer? A young boy, number one. उसके बाद went to number two. Went to कहाँ? Italy. For what purpose? To study art. Over. The boy did was everything very clear. The boy did was everything very clear. तो अभी ना बहुत टाइम में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो कौन सी वर्ड पहले आएगा? तो इधर मतलब क्या आएगा? पहले आएगा everything the boy did was very clear. That boy in Florence grew up to be a painter, the greatest. Okay, so we are talking about a particular painter who was born in Florence. Okay, so he showed us some sign, and because of this signs, so we can understand that he is going to be the greatest painter of Florence. Therefore, that boy one grew up to be the greatest painter in Florence. Therefore, that boy grew up to be the greatest painter in Florence. So my dear children, so I suppose you understood it. Now let us see another category, and after seeing this, we'll close this chapter. So let us go for the next one. So this is the editing work. So these are the editing. How? Just by minding our noun, how we can have the correlation between or agreement between the subject and the verb, and we can do the editing work as into the examination, in the CBSE examination and into the competitive examination too. Therefore, let us go for it. The following passage has not been edited. There is a mistake. There is a mistake in each line. Write the incorrect word as well as the correction in your answer sheet. तो अभी हम इधर देखते हैं, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? तो हम ये पैसेज को पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना? So as soon as you see the passage, हम एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद हमको एक आइडिया होगा. क्या आइडिया होगा? व्हाट का आइडिया होगा. व्हाट मतलब ये पैसेज में क्या, किसका बारे में बोलते हैं? Means it talks about some subject. It talks about some subject. It talks about some theme. It talks about some gist, है ना? ये क्या सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मतलब ये बात करे तो हमको मालूम पड़ जाएगा. वो जब अंदाजा हो जाएगा तब हमको टेंस के बारे में भी अंदाजा होगा, है ना? Whether it is talking about the present indefinite tense or usual or habitual truth or some historical event of the past. अगर historical event of the past होगा तो past simple होगा. अगर habitual और यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करेंगे. तो ये हो गया टेंस और ये हो गया सेंस, है ना? सेंस और मीनिंग, और ये हो गया टेंस. और बाकी हम क्या देखेंगे? विल सी द एग्रीमेंट, है ना? एग्रीमेंट किसके ऊपर में देखेंगे? सो विल सी द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ब, है ना? सब्जेक्ट के नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली सब्जेक्ट मतलब नाउन होता है, जिसका बारे में अभी हम चर्चा किया है. ये नाउन कभी कभी सिंगुलर होता है, कभी कभी प्लूरल होता है. प्लूरल होने से ये प्लूरल वर्ब लेंगे, है ना? वो भी हमको देखना पड़ेगा. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लियोनार्डो डा विंची. व्हेन डा विंची बिकम अ यंग मैन, ये बहुत सिंपल है. ये देखिए
ए यंग मैन, ये इधर ए है, इधर मैन है, तो मतलब क्या होगा, ये गलत है ना। तो आपको मतलब एग्जाम में ऐसा भी लिखने को लिए बोला गया जाता है कि सो सपोज देयर विल बी टू पार्ट हियर, in one part you will be writing the mistake, okay, you will be writing the mistake, and in another part you will be writing the correct one, you will be writing the correct one, that means you will be writing the answer. Therefore in the wrong or the mistake is a man, as A is there, A actually agree with what, man. ये आपका आंसर हो गया, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं अंडरलाइन करने के लिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। व्हेन डा विंची बिकम ए यंग मैन, people heard that he was going to make paintings for a churches. Whenever he tried to draw a horse or a plants, he had to know everything about it. He made many drawings in his notebook. ये बहुत सिंपल है। तो so we are talking about Leonardo da Vinci, and so we'll be concentrating on the noun and we'll be concentrating on the verb. So first one is over. When Da Vinci become a young man, peoples is wrong, है ना। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, people होगा, आंसर होगा people, underline. People heard that he was going to make paintings for a churches. ये देखिए, ये हो गया, ये अगर होगा तो क्या होगा, चर्च होगा, तब ये चर्च होगा। गलत क्या होगा, चर्चेस होगा, चर्चेस होगा। Whenever he tried to draw a horse or a plants, a plants कैसे हो सकते हैं, that means it will be plant. He had to know everything about it. He had to know everything. Everything हरदम क्या होता है, हम तो everything ही मतलब बोले थे, लेकिन इधर दिया हुआ है everything, तब ये everything गलत है। everything हम कभी नहीं बोलते हैं। everything, everyone, each one, तो ये हरदम सिंगुलर होता है। He made many drawing, ये देखिए many मतलब क्या है, प्लूरल है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, वो भी क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। He made many drawings, DRAWINGS, drawings. Therefore, my dear children, I suppose you understand this part also. And now let us go for the last one, and this is for your homework. So you will be writing this one. Let us see this. Complete the sentences given below, taking one word each to fill in a gap from the given box. देखिए people है, mother, mothers, news, shoes, physics. तो physics एक सब्जेक्ट है, physics एक सब्जेक्ट है। Even though it actually looks like plural, it is not, it is singular. Shoes, plural. News, even though it appears to be plural, but it is singular. Mothers, plural. Mother, singular. This is plural, okay, even though singular in form. अभी देखते हैं हमारा exercise. Let us go for the exercise. John gave a present to his one. Children must respect their dash. Dash is good. Number 4, dash are good. Number 5, his dash are weak. Number 6, his dash is weak. Therefore, this is the exercise to be done by you, and the more exercise you do, more perfect you will become, because writing makes you more exact and more perfect. So my dear children, let us conclude this session here. We will meet you in the next video. Till then, bye bye. Have a very good day.